Hello students, we are starting with digital and cyber forensics. This is syllabus for digital and cyber forensics. In unit 1, we have to discuss introduction of networking. That is what are various networking hardwares, networking softwares. Then we have to discuss history and future of cybercrime. And then we have to discuss introduction to computer forensics. So this is a part of our unit 1. Then we will in the unit 2 we have to discuss computer crimes and criminals. That is what kinds of crimes are there in a computer and what kinds of criminals are there, that we have to discuss in unit 2. Then in unit 3 we have to discuss how to collect and preserve the digital evidence. Whenever a digital crime occur, in that case how to collect the data related to that crime and how to preserve that digital data or digital evidence. This is about your unit 3. And unit 4 is computer hardware and software. In computer hardware and software we have to discuss various computer architectures, components, then motherboard structures, etc. And then computer softwares and operating systems we have to discuss. We should know various types of operating systems and their working. That is to be discussed in unit 4. And then we have to discuss how to preserve and recover a digital evidence. So this is the syllabus of digital and cyber forensics, Gondwana University, MSc Computer Science, semester 2. This is a paper 2, digital and cyber forensics. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग से. इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग. अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट that is connected together so that they can communicate with each other. Broadly speaking, there are two types of network configuration, peer to peer and client server. So network जो है वो दो types का होता है. एक तो peer to peer network होता है जिसमें devices are connected to each other directly. We can call it as a peer to peer. Suppose this is one device and this is another device. If they are connected directly, we can call it as a peer-to-peer network connection. And client server is a kind of network connection where there is a client server which is controlling various devices, and this server act as a client. This server is act as a storage for data, and clients are accessing data with the help of a server. So this is a kind of a client server networks. And here we can see the description. Peer-to-peer networks are more commonly implemented where less than 10 computers are involved. So अगर computers 10 से लेस है या फिर मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है तो वहाँ पे आप सिस्टम्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. तो ऐसे नेटवर्क को हम peer to peer नेटवर्क बोलते हैं. All the computers have the same status, hence we call it as a peer. So there is no like a master and slave relationship between the computers. Both the computers have the same status. That's why we call it as a peer-to-peer network. Then second is a client-server network. So client-server network क्या होता है? Client-server networks are more suitable for large networks. So जहाँ पे ज़्यादा computers है वहाँ पे client-server networking use होता है. The central computer is called as a server. So जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो central computer है वो server होता है और client जो है वो उसके. The server also controls the network access of the other computers which are referred to as a client. So network access of other computers is controlled by the clients, by the server. So these are the clients and this is the server. This is about client server networks. Then now we start with networking hardware. So networking hardware क्या होता है? Today most people who operate in business world or in any administrative or clerical capacity in the public sector gain some exposure to computers. The fact that they use computers every day doesn't mean that they understand them. However, this makes the sense. Most of us drive cars every day without necessarily knowing anything about mechanism. So computer hardware is what inside the computer, what are the various hardware parts of computer, how the computer actually works. Though we use the computer, we should know what are the internal parts of computer and how
the parts are working, that is networking hardware. So we discuss now various networking hardware specific devices. तो कौन से devices है जिसको हम networking devices बोलते हैं. तो गेटवे होता है. This is a device placed at the network node and interfaces with another network that uses different protocols. So 2 different networks को connect करने के लिए गेटवे यूज होता है. Then it works on OSI layers 4 to 7. So the OSI model is there, which is a networking model. और इसके जो टॉप मोस्ट लेयर होते हैं लेयर 4, 5, 6 एंड 7, ये लेयर्स पे गेटवे वर्क करता है. नाउ राउटर क्या होता है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट टू विच इट कैन फॉरवर्ड अ डेटा पैकेट टूवर्ड्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट. सो पैकेट टू पैकेट डिलीवरी जो है वो राउटर करता है. राउटर डिसाइड्स रूट्स ऑफ द पैकेट. जो डेटा एक राउटर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ पैकेट. एंड it works in the network layer, that is layer 3 of the OSI model. Then next is a switch. Switch is a device that allocates traffic from one network segment to certain lines with which connect the segment to another network segment. So unlike a hub, switch splits the network traffic and send it to different destination rather than to all system on the network. It works on OSI layer 2. So layer 2 पे जो है वो switch work करता है. उसके बाद में ब्रिज क्या होता है? सो ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स अलॉन्ग द डेटा लिंक लेयर. दिस इज वर्क्स एट लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल. एंड हब क्या होता है? हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट सेगमेंट्स मेकिंग देम एक्ट एज अ सिंगल सेगमेंट. सो दिस इज अबाउट हब. एंड रिपीटर क्या होता है? रिपीटर इज कॉल्ड एज अ रीजनरेटर और सेगमेंट सिग्नल रीजनरेटर. It is a device which amplifies or regenerates the digital signal received while sending them from one part to another. So एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जब सिग्नल जाता है तो वो because of the external noises or heat it loses its energy. So to re-energize that signal, this repeater is used. It amplifies or regenerates the signal so that data should not be lost. तो ये सब हमने डिस्कस किए हैं कुछ नेटवर्किंग के हार्डवेयर स्पेसिफिक डिवाइसेस, दैट इज गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज, हब एंड रिपीटर. सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया सिलेबस क्या है आपका डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स का. उसके बाद में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है. यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. उसके बाद में हमने डिस्कस किया है नेटवर्किंग हार्डवेयर क्या होता है और हमने वेरियस हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज, हब एंड रिपीटर ये डिस्कस किया है. सो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ यू हैव नॉट शेयर, सब्सक्राइब और लाइक दिस चैनल, प्लीज डू दैट so that you can see more videos on this topic. Thank you.